Hello, you're watching Hornbill TV's Prime Time, and now the headlines. The CBI has filed a charge sheet against Satyapal Malik, the former governor of Jammu and Kashmir, along with his 2 private secretaries and 4 others in an alleged corruption case related to the Kiro hydroelectric project in Jammu and Kashmir. The Punjab and Haryana High Court received a bomb threat on Thursday, leading to the evacuation of courtrooms and the suspension of work. India has delivered a strong rebuttal to Pakistan at the World Health Organization, calling out its role in fostering terrorism. Two Israeli embassy staff were shot dead outside a Jewish museum in downtown Washington, DC by a man who police say shouted "Free, Free Palestine" after the attack. And now the news in detail. As traders and other sectors continue to boycott Turkey for their support to Pakistan following the Pahalgam terror attack and the subsequent Operation Sindoor, the Ministry of External Affairs on Thursday urged Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable action against the terror ecosystem it has harbored for decades. MEA spokesperson Randir Jaiswal said relations are built on the basis of sensitivities to each other's concerns. Turkey matter, Shalabi, this matter has been discussed between with the Turkish embassy here, the Turkish embassy and our Ministry of External Affairs. But I understand that this particular decision was taken by the Bureau of Immigration because they look, Civil Aviation Security, because they are mandated with security issues. On the question of Turkey, well, we expect Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable action against the terror ecosystem that it has harbored for decades now. And relations, as you know, are built on the basis of sensitivities to each other's. The Central Bureau of Investigation has filed a charge sheet against Satyapal Malik, the former governor of Jammu and Kashmir, along with his 2 private secretaries and 4 others in an alleged corruption case related to the Kiro hydroelectric project in Jammu and Kashmir. Meanwhile, Satyapal Malik's official social media account posted an update stating that he has been hospitalized after his health deteriorated and is currently unable to speak to anyone. The post also included a photo of the former Jammu and Kashmir governor lying on a hospital bed. Mention may be made in February last year, the CBI conducted searches at former Jammu and Kashmir governor Satyapal Malik's Delhi residence, as well as the homes of several of his relatives and associates. The raids were part of an investigation into alleged corruption in the awarding of civil contracts worth Rs 2,200 crore for the Kiro hydroelectric power project. Notably, Malik, who claims to be the whistleblower in the case, first raised concerns about corruption in October 2021 while serving as governor of Meghalaya. The Punjab and Haryana High Court received a bomb threat on Thursday, leading to the evacuation of courtrooms and the suspension of work. Secretary of the Punjab and Haryana High Court Bar Association, Gagandip Jammu, said they received a bomb threat. The lawyers and staff were asked to vacate the High Court. The court's work was suspended until 2 p.m. Chandigarh police are carrying out checks at the High Court premises after they were informed of the bomb threat.
क्या कुछ जानकारी मिली है उसके बारे में बताएं। हमें अभी बस एक मैसेज आया ऊपर से कि हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो हमने साथ के साथ जैसे मैसेज आया सारी हाई कोर्ट के अपने वकील साहबान सब स्टाफ को हाई कोर्ट से खाली करा दिया जी। मैसेज आया था किसकी तरफ से? अभी ऊपर से हमें प्रोटोकॉल की तरफ से मैसेज आया था कि भी ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके कारण जैसे ही मैसेज आया हमने साथ के साथ सबको यहाँ से खाली करने का कह दिया था। कोई कह रहा था मॉक ड्रिल है नहीं है, तो हमने अपने किसी को खतरे में ना डालते हुए तो हमने सबको कोर्ट को खाली करा दिया। कितने बजे तक काम को सस्पेंड किया? अभी 2 बजे तक किया गया। अगर कुछ हुआ ऊपर से हमें चीफ की तरफ से या कोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से मैसेज आया कि कुछ थ्रेट रियल है या जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे स्टेप लेंगे। अभी 2 बजे तक के लिए खाली करा दी कोर्ट। इस तरीके से बम स्क्वाड और बाकी चीजें पहुंचे यहाँ पे, उससे लग रहा है थ्रेट कॉल ही है या मॉक ड्रिल? देखो, अगर मॉक ड्रिल हो ना हो वो तो भगवान जाने, बट हमें अगर थ्रेट लग रहा है तो हमें किसी की जान को खतरे में ना डालते हुए हमने सारी कोर्ट खाली करा दीजिएगी। कोर्ट का फुटफॉल कितना है, कितने वकील? कोर्ट का एडवोकेट्स 4 से 5 हज़ार आते हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ, लिटिगेंट, पुलिस, मुलाजिम सब डालकर, तो आसपास 15 से 20 हज़ार लोग आते हैं रोज। थैंक यू। Meanwhile, RPF Inspector Ravindra Singh has informed that a bomb threat was also received at the Haryana's Ambala DC office. The Government Railway Police and Railway Protection Force have started a search operation at the station. ऑफिस को उड़ाने की बम से धमकी दी गई थी, उसके बाद से हम सतर्क हैं। जीआरपी आरपीएफ मिलके स्टेशन को और यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है लगातार। आज भी उसी क्रम में हमने एक चेकिंग अभियान चलाया। हमने पार्सल और बाकी जगहों पे, वेटिंग एरिया में, प्लेटफॉर्मों पे, हर जगह पे चेकिंग की है। थोरोली चेकिंग की है कि किसी तरीके का कोई ऐसा पदार्थ जिससे खतरा हो सके वो ना मिले। हमें चेकिंग के दौरान सब ठीक मिला है। हम इस तरह की चेकिंग लगातार करते रहेंगे। यात्रियों को और स्टेशन को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए ही हम सब काम कर रहे हैं। किस तरह काम कर रही है? डे नाइट जीआरपी आरपीएफ मिलके जो है हम काम करते हैं। हम दोनों की जिम्मेदारी है यात्रियों को और स्टेशन को सुरक्षित रखना। हम दोनों मिलके जो है इस काम को अंजाम देने के लिए मिलके ड्यूटी बीट्स बांट लेते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस को कैसे ड्यूटियां करनी है। तो एंट्री से लेके प्लेटफॉर्म और हर जो पॉइंट सेंसिटिव है वहाँ पे ड्यूटियां लगाई गई। देखा जी, जैसे कि धमकी मिली थी किसी विस्फोटक पदार्थ के होने की, इस तरीके की सूचनाएं जब डीसी ऑफिस को मिल सकती हैं, तो स्टेशन भी एक सेंसिटिव जगह है, तो डॉग स्क्वाड को इसीलिए लिया गया था साथ में, ताकि किसी तरीके का कोई विस्फोटक पदार्थ कहीं से ना मिले। यही हमारे द्वारा किया गया है। We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. State Institute of Hotel Management Dimapur Academic Year 2025 to 26 निमित्ते एडमिशन शुरू होइছে। SIHM Dimapur ऑफर কৰি আছে हॉस्पिटैलिटी और होटल एडमिनिस्ट्रेशन दे 3 साल लगा बैचलर्स डिग्री कुंडू NCHMCT লগত एफिलिएटेड আছে और डिग्री सर्टिफिकेट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली পৰা अवार्ड কৰিব। फूड प्रोडक्शन और फूड एंड बेवरेज सर्विस लगा 1.5 year डिप्लोमा प्रोग्राम भी ऑफर কৰি আছে SIHM Dimapur। SIHM Dimapur laga mission do quality education और personal growth ase। Institute laga dedicated faculty, experienced mentors और hands-on learning environments pra students can get training di ase। Etu egla nohoi yate career ge age loi jabole nimite state of the art infrastructure, top package, thaga laga bishi bhal placement, maiki mota nimite alag alag hostels और strong industry partnerships bi di ase। अपनी लग्जरी रिजॉर्ट मैनेज কৰিবলৈ নহলবি ক্ৰুজ লাইন দে শেফ হ'বলৈ সপনা আছে বলে SIHM Dimapur अपनी के सक्सेस কৰিবলৈ लॉन्च पैड আছে। তো নাৰখিনা জলদি কৰিবি এডমিশন খোলা আছে আৰু বি जानकारी লবলৈ কল কৰিবি 9233895656 9863177951 দে। Visit www.sihmdimapur.com। Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Every Day is your #1 choice.
Welcome back. In a significant blow to Naxal operations in central India, security forces neutralized 27 Naxals, including top Maoist leader Basava Raju, during a major encounter in the dense forest regions of Abujmad in Narayanpur district on May 21. The operation was led by the district reserve force in coordination with other state and central security agencies. On Thursday, IG Bastar P. Sundaraj, along with senior police officials, inspected the site and confirmed the recovery and identification of all 27 bodies. Speaking on the development, Chhattisgarh Director General of Police Arun Dev Gautam stated, all of them have been identified. There will be a press briefing in Raipur. Basava Raju, considered one of the most wanted Maoist commanders in India, had been a key figure in directing insurgent activities across several states for decades. His death marks a major success for the ongoing counter-insurgency efforts. सभी की पहचान हो चुकी है। आपको इसकी पूरी प्रेस ब्रीफिंग रायपुर में दे दी जाएगी। बसवा राजू कौन था वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। इतना समझना पर्याप्त है कि माओवाद का शीर्षस्थ नेतृत्व था ये। जी सर, शीर्ष नेतृत्व तो खत्म हो गया सर, उसके बाद आपको क्या लगता है कौन इसका जगह लेगा या फिर ये हमारे से क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट होगा, उनकी लीडरशिप कंफ्यूज होगी। मुझे लगता है। मुझे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रणनीति जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। वो प्रश्न तो है उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए। डेफिनेटली सर, आपने कहा 31 मार्च के पहले खत्म कर देंगे सर? हमने नहीं कहा, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है। अभी आपने कहा उसके पहले ही हम कर देंगे? नहीं, पहले नहीं, पहले ठीक है, पहले हो जाए बहुत अच्छी बात। अच्छी बात। बसवा राजू के बच्चों को लेकर भी कोई इनपुट आ रहा है क्या? कोई जानकारी ऐसी है परिवार के लोगों को लेकर? अभी कोई जानकारी नहीं। A month after the Pahalgam terror attack, tourist footfall in Pahalgam remains extremely low. Tourist attractions, hotels and streets appear deserted. A local businessman, Mohammad Ashraf, said Pahalgam has been deserted since the day of the attack. There are vehicles but no one to hire them. He said, however, that they have hope that tourism will thrive again. He also stated that they are pinning their hopes on the Amarnath Yatra. नाम बताइए और ये बताइए आप कहां से हैं और आज ही के दिन हमारे बेगुनाह निहत्थे टूरिस्ट का कत्ल हुआ था। आज ही का दिन था, 22 अप्रैल था और आज 1 महीना पूरा हो गया है। जी सर, जी सर। तो ये बताइए कि अभी पहलगाम के किस तरीके के हालात हैं? क्या टूरिस्ट यहाँ पे फिर से रागिब हो रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं बिलोंग पहलगाम से 6 किलोमीटर नीचे करता हूँ जी। लेकिन मेरा जो मेन बिजनेस है वो तो गाड़ियों का ही है, टूरिज्म के साथ ही है। आज तो अपने दुख का इजहार और फिर से करेंगे ना। 22 अप्रैल, अभी तो आज 1 महीना हो गया जी कि हमारे वो टूरिस्ट जो घूमने आए थे उनका कत्लेआम हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वो दरिंदुनी हरकत की थी, ऐसा नहीं होना चाहिए थी। तब से पहलगाम से आज तक पहलगाम पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए सर, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं लेकिन जाने के लिए कोई है नहीं। लेकिन उम्मीद से बैठे हुए हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले साल में टूरिज्म फिर से बढ़ जाएगा। यही हमारी उम्मीद है, यही उम्मीद लगा के बैठे हैं। क्या मोदी सरकार पे भरोसा है आपको कि फिर सरकार के ऊपर 100% भरोसा है हमारा कि दोबारा फिर से बहाल हो जाएगा। ऐसा ही तो ये रहेगा ना। उम्मीद से बैठे हुए हैं। यात्रा भी आने वाली यात्रा, अभी तो यात्रा का सिस्टम भी चालू है। अभी सिक्योरिटी जा रही है। अभी अमरनाथ यात्रा नेक्स्ट महीने में आने वाली है, वो भी तो होगी। उम्मीद से तो बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतने बेरोजगार रवान बैठे हैं ना, सबकी नजरें अभी यात्रा के ऊपर टिकी हुई है कि यात्रा लगेगी, थोड़ा बहुत तो कमाई होगी। अभी कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा। अभी तो टूरिस्ट कोई है नहीं। हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। जी। जिस दिन भी वो कांड हुआ था 22 अप्रैल को, उस दिन यहाँ पे जगह नहीं थी आपको बैठने के लिए और किसी से बात करने के लिए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पूरा रश, पूरा क्राउड, इतना टूरिस्ट रहता था।
लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। आज 1 महीना पूरा हो गया है। आपके दिलों में अभी भी वही दुख, वही दर्द अभी भी है। पहली बार ये जख्म का हील अप हो जाएगा। अभी सर मेरी उम्र 55 है, लेकिन पहली बार इतनी मिलिटेंसी देखी ना, पहली बार ये पहलगाम में अटैक हुआ, पहली बार, जो हमारे दिमाग में ही नहीं था, या किसी लोकल से भी बात कर लो, यहाँ पे किसी के माइंड में नहीं था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। ये हमारी बदनसीबी थी, बदकिस्मती थी कि ऐसा कांड हुआ, ऐसा वहशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी भी हमारे दिलों में ये दुख दर्द ऐसे ही सहमा हुआ। We'll be right back after another break, so stay tuned for more news. তহতে নাম ভৰ্তি কৰিলি নে? কিহৰ নাম ভৰ্তি আকৌ? ইহঁতে একো গমেই নাপায় দেখোন। তেনেহলে শুন, অসম চৰকাৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমৰ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আৰু কলেজসমূহৰ বাবে মেডিকেল টেকনলজি অৰ্থাৎ পেৰামেডিকেল কোৰ্ছৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে। লগতে বেচেলৰ ইন ফাৰ্মাচী আৰু ডিপ্লোমা ইন ফাৰ্মাচীৰো প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে। পিছে পেৰামেডিকেলৰ কি কোৰ্ছ আছে কচোন ভালকৈ? ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্ছ আছে, যেনে মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনলজি, মেডিকেল ৰেডিঅলজি এণ্ড ইমেজিং টেকনলজি, কাৰ্ডিঅ' কেয়াৰ টেকনলজি, ট্ৰমা এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনলজি, ICU টেকনলজি, OT টেকনলজি, এনেস্থেচিয়া এণ্ড ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ টেকনলজি, ব্লাড বেংকিং টেকনলজি, ডায়ালিচিছ টেকনলজি, ফিজিঅথেৰাপি আৰু অপটিমেট্ৰি। বল তেনেহলে আজি নাম ভৰ্তি কৰো বল। আপুনিও এই সোণালী সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বিজ্ঞানৰ দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ এই প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰে। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আজিয়ে অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাওক। আমি সকলোৱে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ নিজৰ জীৱন গঢ়ো আহক। লোকেল আৰু সিজনেল সবজি খাটো এনভাইৰনমেন্ট আৰু গাঁও নিমিত্তে বেছি লাভ আছে। আহিবি জানিব। লোকেল সবজি খাটো খাবলৈ বেছি মিঠা আছে। কেলে নিমিত্তে ইটো সবজি খান ঠিক প্ৰায় পাকিয়া পিছে দেখি বিক্ৰী কৰে। লোকেল সবজি দে দাৱাই খান নাচলাই আৰু নিউট্ৰিয়েন্টছ বেছি থাকে নিমিত্তে আমি খানা গাঁওকে ভাল ৰাখে আৰু ৱেডাৰ লগা হিচাপতে আমি খান কিচিম বি খাব পায়। লোকেল সবজি খান দাম বি বেছি কম দি থাকে। খানা খান আলাগ জাগাৰ পৰা আহে আৰু সময় কাৰ্বন বেছি ফেলাই দে। ইটো নিমিত্তে লোকেল খাটো এনভাইৰনমেন্ট কাৰণে বি বেছি ভাল আছে। दूसरा जगह पर आया खाना तो बेसी दिन पलाई किना आहे और बेसी बार बिया भी हो जाए। इतो निमित्ते लोकल खाना खातो फूड वेस्टेज भी कमती होय और आखिरते लोकल सामान किनिया परा निजर मानुके भी बेसी मदद करे। Welcome back. Exercising India's right of reply at the WHO headquarters in Geneva, Indian diplomat Anupama Singh fiercely targeted Pakistan in the WHO meeting. On the issue of terrorism, India exposed Pakistan in WHO and said Pakistan breeds terrorism, cannot masquerade as its victim. Let us not forget the sponsors and organizers of terrorism operate from Pakistani soil. In response, India launched Operation Sindoor, precise, proportionate and focused on the infrastructure of terror inside Pakistan, she said. She further added, Pakistan also continues its false narrative regarding the Indus water treaties, trying to obfuscate the issue. Attacking Pakistan further, she said, a state that breeds terrorism cannot masquerade as its victims. India exercises its right of reply in response to Pakistan's statement in the plenary session. Let me set the record straight. On 22nd April 2025, Pakistan trained terrorists massacred 26 innocent tourists in Pahalgam, executed at point-blank range, in front of their families. It was a scene of unimaginable horror, a deliberate slaughter of innocents. The UNSC rightly underscored the need to uphold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable. Let us not forget
these sponsors and organizers operate from Pakistani soil. In response, India launched Operation Sindoor, precise, proportionate, and focused on the infrastructure of terror inside Pakistan. We took measures to ensure that civilians were neither targeted nor harmed, rather only the Pakistan-trained terrorists and their well-known hideouts. Pakistan also continues its false narrative regarding the Indus Water Treaty, trying to obfuscate the issue, and they even do so while simultaneously sponsoring cross-border terror, flagrantly violating the very spirit of this treaty or any treaty. They cannot blithely speak of the benefits of peace while actively exporting violence. A state that breeds terrorism cannot masquerade as its victim. Please. Even now, Pakistan's military honors terrorists with state funerals, including individuals under global sanctions. It is a display of shameless duplicity. Pakistan remains the global epicenter of jihadist terror, and no amount of linguistic maneuvering, no veil of rhetoric can obscure its record as a systemic sponsor of terrorism. India has acted and will continue to act as long as necessary to protect our people, uphold our sovereignty, and dismantle the networks of violence aimed at our country. Thank you. Two Israeli embassy staff were shot dead outside a Jewish museum in downtown Washington, D.C. by a man who police say shouted, "Free, free Palestine," after the attack. The victims, a young couple, were shot while leaving an event at the Capitol Jewish Museum, D.C. police said, adding that the incident appears targeted. The shooting happened at 21:05 local time in an area with numerous tourist sites, museums and government buildings, including the FBI's Washington field office. After the suspect, who has been detained by authorities, opened fire, he walked inside the museum and was stopped by security. Metropolitan Police Department Chief Pamela Smith said the suspect, Elias Rodriguez, 30 of Chicago, was seen pacing outside the museum before opening fire on a group of four, killing the couple, Chief Smith said at a news conference. Israeli ambassador to the U.S., Yechiel Leita, shared at the conference that the couple killed had been planning to get engaged. Leiter said the male victim had purchased a ring this week and had planned to propose on a trip they planned to Jerusalem. The victims' names have not been released. Jojo Kalin, a board member of the American Jewish Committee who helped organize the event, said she didn't witness the shooting but felt a sense of guilt about what happened. US President Donald Trump suggested the killings were driven by anti-Semitism. Israel's ambassador to the United Nations called the incident a depraved act of anti-Semitic terrorism. Museum here in Washington, D.C., and the rumor has it that there were members of the Israeli embassy who were targeted or injured. We're still looking at. The Supreme Court has stayed the ongoing investigation by the Enforcement Directorate into Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited, or the TASMAC, a state-run corporation responsible for liquor sales in Tamil Nadu, and stayed the action by the central agency in the money laundering case initiated by it in connection with the matter. The stay was granted in response to a plea filed by the Tamil Nadu government challenging the ED's raids on TASMAC premises. A bench headed by Chief Justice of India B.R. Gavai also issued a notice to the ED observing that the federal agency appeared to be crossing all limits in its actions. DMK spokesperson Sravanan Anadurai said on Thursday this FIR in the TASMAC case is pathetic. They are aggregating 50 FIRs as the Enforcement Directorate gets jurisdiction only if the value is above rupees 40 lakh or so. Absolutely, that is what they are doing. It is farcical. This FIR in the TASMAC is pathetic. Any legal person will not agree to that. They are aggregating 50 FIRs because Enforcement Directorate gets jurisdiction only if the value is above 40 lakhs or so. So what are they doing? They are aggregating 50 FIRs, 30 from the ADMK government, 20 from the DMK government, and they are combining everything and say, oh, we have got jurisdiction. Is this your duty? Why are you stooping so low? Don't you not have guiding principles on how to go about it? Just because your political bosses say so, will you go against the political opposition? It has to be condemned, and every opposition party has condemned it. Now, the Supreme Court has belled the cat. We'll see how the Enforcement Directorate acts further. And see, everybody is fearing the Enforcement Directorate only because of its bail provision. But the Supreme Court has come again and again now said you cannot put them inside the jail just because you are being charged with the money laundering offense. So I think the worst days of money laundering or the Enforcement Directorate being a threat upon the opposition will be over.
And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye. Ready? 3, 2, 1, go. And we all need a little more clarity on the details about life, people and events that truly matter. Because sometimes news is more than mere information. From credible news organizations, credible news, and from credible and award-winning journalists. Because proper news can not only inform our lives but also change the way we look at it. In-depth and straight to the point, because the truth deserves clarity. We pursue events that are not only important to you but also useful for our life's perspective. We are Hornbill TV. Join us every month on Health Talks on Hornbill TV, your trusted health show, bringing you expert insights from top doctors, updates on treatments, and wellness tips for a better, healthier life. From lifestyle diseases to mental health, we cover it all because your health matters. Only on Hornbill TV. The Jawaharlal Nehru National Solar Mission, or the National Solar Mission, was launched on 11th January 2010. JNSM is a major initiative of the Government of India with active participation from states to promote ecological sustainable growth while addressing India's energy security challenges. The National Institute of Solar Energy has assessed the country's solar potential of about